So now we can start our program. Actually, we have delayed by 8 minutes due to this power cut. So uh, today we are organizing these 17 days of our Yog Samvad of 21 days. And uh, before this session, we have covered different dimensions of yoga related to the Bhakti Yoga, then Gyan Yoga, Karma Yoga, and also some specific topics like Swadhyay, diet, etc. So in this line, we have uh, Honorable Vice Chancellor Sri Vaishnav Vishwavidyalaya, Dr. Rupinder Dhar sir, and the topic is that Ashtang Yoga. तो सर ने जैसे पहले इनॉग्रल सेशन में बोला कुछ अपने विचार रखे थे, उसमें यम नियम के बारे में बताया था, उसी में अष्टांग योग को आज डिस्कस होगा डिटेल में। और उस दिन सर ने बताया था कि जैसे योग को हम वी कैन नॉट थिंक योग इन इंडिविजुअलिटी, इट इज रिलेटेड विद द कनेक्शन, कनेक्टेडनेस है। तो इसका डिफिनेशन भी जैसे आता है कि योग एक यूनियन है, and in the broader term it's a union of individual self to the universal self. And the first sutra of Patanjali is the Atha Yoga Anushasana. That means योग अनुशासन है। अनुशासन मतलब माने कि is a self discipline. This शासन, that means it is to be imposed by self. शासन और अनुशासन में ही अंतर होता है। शासन में होता है कि रूल्स हमको फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि आपका ट्रैफिक रूल है तो ट्रैफिक रूल हमको फॉलो करना पड़ेगा, जस्ट आपको दैट मीन्स वी हैव टू फॉलो दैट रूल ड्यू टू सर्टेन गाइडलाइंस। बट यहाँ पे योग में क्या है कि अनुशासन रहना मतलब अपने लिए बनाना है, जो नियम बनाना है, दैट वी हैव टू मेक एंड वी हैव टू फॉलो दिस। ठीक, सो now I request Professor Ruchi Arya to please briefly introduce Dr. Upinder Dhar sir to the audience. Ruchi? Yes, sir. Am I audible, sir? Yeah, you're audible. Thank you so much, sir. Being a source of inspiration, knowledge, futuristic approach, motivation to all the faculty fraternity of SVV Indore, I feel honored to introduce our today's resource person to the audience, Dr. Upinder Dhar. Dr. Upinder Dhar is a Vice Chancellor of Sri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya, Indore. Earlier, he was Group Additional Vice Chancellor and Pro Vice Chancellor Academic, Amity University, Noida. Founder Vice Chancellor of JK Lakshmipat University, Jaipur. Director, Institute of Management. Dean, Faculty of Management. And Dean, Faculty of Doctoral Study and Research, Nirma University. I think that much is enough. That much is enough. Yes, sir. We can start. Yeah. Okay. All right. Namaskar. So, shall I invite you first? Okay. Yes, sir. It is an absolute honor to have you with us, sir. Now I would like to invite you to enlighten us more about the topic. Over to you, sir. Okay, thank you very much. हमारे योगाचार्य परम आदरणीय राजीव शुक्ला जी और सभी फैकल्टी कलीग्स, friends and students, particularly all those who are interested in knowing more about yoga, or what you call in English yoga, but original term is yoga. As Dr. Rajiv Shukla has already mentioned, yoga refers to union of mind, body and spirit. Well, there are many rishis and scholars who have contributed to this concept. कई सारे ऋषि हुए हैं, कई सारे विद्वान हुए हैं जिन्होंने योग के कॉन्सेप्ट को कंट्रीब्यूट किया, and they have tried to explain their own way how to do it, how to make it possible to have a union of body, mind and spirit.
So in other words, there are number of schools of thought. जैसे हर सब्जेक्ट में कई schools of thought होते हैं, इस केस में भी there are number of schools of thought. And इन सभी schools of thoughts ज्यादा पॉपुलर स्कूल ऑफ थॉट है जिसपे कई लोगों ने कमेंट्री भी लिखी है, कमेंट्स दिए हैं, अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर की है. दैट इज द योग सूत्र which was propounded by Patanjali. So Patanjali's Yog Sutra is one of the most popular scripts, and you can say manuscripts and documents in this area. And at the same time, I repeat, Patanjali is not the only one. कई और schools of thought है, but yes, Patanjali is the most popular one. Therefore, I would like to share with all of you what Patanjali has propounded and what we should do and what we should not do. जैसे unfortunately क्या हो गया in recent times, it has become a fashion. It has, even to some extent in certain segments of the society, it has become a social status. So many people just say this, मैं सब योग करता हूँ, yoga करता हूँ, and very regularly करता हूँ. But then if we go by this sutra, we will understand योग कब हम कह सकते हैं, when can we claim that yes, we are really doing yoga and completing the whole process. It is a process, there is a phenomenon that we'll try to understand. So मैं आपके साथ ये PPT share करता हूँ, which will make things more, which will make things clear. Just give me some time. Okay, can you see it? Can you see the screen, please? अभी नहीं आया है नहीं सर. आया? अभी नहीं. No, Okay, just. Okay, can you see now? No, sir. Not yet. Not coming.
वेट फॉर सम टाइम, अभी इंतजार, मेरे ख्याल से पावर कट का कुछ हो रहा होगा। चलिए समय का सर जो ज्वाइन हो तब तक समय का उपयोग कर लेते हैं थोड़ा। तो अभी ये दिस इज 17 डेज ऑफ दिस योग संवाद ऑफ 21 डेज। 18th को कल जो है वो चिन्मय मिशन के स्वामी हैं, स्वामी प्रबोधानंद जी, उनका कल सेशन रखा हुआ है। हाँ, अब हो गया सर का ज्वाइन। यस सर, दिख रहा है अब सर? The screen visible है, but you are muted. सर स्क्रीन शेयर हो गया है। Yeah. हाँ जी सर। Can you hear me? यस सर। All right. फोटो नहीं दिख रहा है Yes. सर? Okay. फोटो also आप देखना चाहते हैं? हाँ जी सर, जरूर। Yes, sir. Okay. Okay. स्टार्ट वीडियो से हो जाएगा ना? हाँ वो आ गया सर, आ गया। Yes, आ sir. गया। Yeah. Now परफेक्ट परफेक्ट सर, परफेक्ट हो गया। Okay. Very good. जी सर। अच्छा, इसको मैं स्लाइड शो में करूं? Yes, sir. Okay. जी सर। Now, what I was saying, I would like to share what Patanjali has said and how we can do it. And the school of thought is called Ashtang Yoga. Why Ashtang? Because he has talked about 8-fold means of yoga. योगा तो अंग्रेजी में हो गया, लेकिन एक्चुअल जैसे मैंने शुरू में कहा, ओरिजिनल टर्म इज योग. Some people also translate it as 8 limbs. So Ashtang, अंग से लिटरल ट्रांसलेशन करके कई लोग इसको 8 limbs of yoga भी कहते हैं. All right. Ashtang Yoga is Patanjali's classification of classical yoga as set out in his Yoga Sutras. The Yoga Sutras were authored by Patanjali. He defined the 8 limbs or 8 eightfold means जिसको हम कहते हैं, या 8 limbs कुछ लोगों ने जैसे ट्रांसलेट किया as number 1 यम. जो पहला एक सेशन हुआ था आई थिंक 1 जून को, उस दिन भी जो रिसोर्स पर्सन थे उन्होंने भी इसी की बात की. He also spoke on Ashtanga Yoga. Here again I am trying to share with you, and maybe if there are certain things which were not clear, that those points can be clarified today. So first requirement for yoga as per Patanjali is yam. अब कई लोगों ने जब इसको ट्रांसलेट किया है तो वो यमा बोलते हैं, बट बेसिकली ओरिजिनल यम. यम का मतलब क्या है? यम मीन्स abstinence. That means all those things which one should not do. So one should develop the habit of not doing certain things. One should develop
the practices in one's daily life not to do certain things. All those fall under yam. ये पहली requirement. This is the first requirement. Abstinence. जो नहीं करना चाहिए आपको. What is not expected from you. As Dr. Shukla said, discipline. See, जब हम discipline भी define करते हैं, discipline means when one's behavior is in line with the expectations, what is expected from a person. So there may be certain rules. So if we, because of those rules, we have certain expectations from a person. So when behavior is in line with those expectations, then we say a person is disciplined. So first requirement is abstinence, certain things which one should not do. Further, second one is niyam. Niyam refers to all those practices which one should adopt, which one should do. And it is called, in English, we call it observance, what one should observe. So in first case, all those practices which one should not do, that is one abstinence. Second, all those practices which one should observe, which one should do. So one must have the control on the activities that one is performing during the day, whole day, and ensure that those activities जो व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए as per this sutra, वो मैं अभी शेयर करता हूं आपके साथ. For example, हिंसा. हिंसा दूसरे किसी व्यक्ति के या दूसरे जीव की हिंसा या हत्या करना एब्स्टिनेंस में आता है, नहीं करना चाहिए. Similarly, नियम में those practices which one should do, that will be falling under observance. Then there is third stage, that is आसन. अब आसन को भी जब अंग्रेजी इंग्लिश में लिखते हैं, कई लोग तो आसना करते हैं, बट आसना हिंदी संस्कृत में शब्द नहीं है, एक्चुअली आसन. So that means posture of body, how one should sit, how one should stand. That is the third level. One must learn. अगर नीचे बैठते हैं तो कैसे बैठना चाहिए. Say for example, your vertebral column should be straight, your head should be straight. So different postures one may have, but then what are the desirable postures? One should know that. Desirable postures कौन से हैं, which can ensure your health, which can ensure that you remain healthy. So many times we have certain postures, we develop the habit of having certain postures which are not healthy. They जैसे spondylitis हो जाता है कई लोगों को. So they may give rise to many health problems. So first, yam, niyam, then asan. English में बोलना हो तो abstinence, observance, and posture of body. Fourth is pranayam. Pranayam हम सभी जानते हैं, हर कोई नाम ये लेता है आजकल. That means what? Pranayam refers to control of breath. So one has to learn. Once one has learned how to how to sit, how to stand, what is the correct posture of body, then comes the question of control of breath. So control of breath, fourth level पे आता है. So one has to master. One can master it if one has developed certain control on first three. So then he or she qualifies for the fourth level. So pranayam, प्राणों को रेफर करता है. So प्राण breath में, अगर breath किसी का बंद हो तो is declared dead. तो अभी जैसे अनफॉर्चुनेटली जो अभी क्राइसिस हुई कोरोना की, पिछले 1.5 साल से चल रही है, क्यों इतने लोग मरे? So many people have died. Why? Ultimately, whatever were the symptoms, उनमें से सबसे जिसके कारण लोग मरे, because they lost the control on breath. There was loss of control on breath.
so they could not breathe. तो ये तो क्या एक डिजीज की कंडीशन, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में we need to learn how to control the breath, and उसी प्रोसेस को इन्होंने कहा प्राणायाम. सो यम, नियम, आसन, pranayam. If we have to remember in English, then abstinence, observance, posture of body, and control of breath. So इन चार अभी तक जितने बताया चर्चा किया मैंने, इससे आपको आइडिया होना चाहिए that when we are talking about yoga, we are not referring to a religion. It is not a part of religion in that sense. It has more to do with spirituality. It is more a faculty of the spirituality. Fifth one is pratyaha. That is the fifth level. Pratyaha, that is withdrawal of senses. Once one has learned what not to do, one has learned what one should do, what one should regularly observe. Then once one has learned how to sit, how to stand, what should be the right, when we sit on the chair, which is the right posture, when we sit on the floor, which is the right posture. Once it is done, then you go to the control of breath. And once control of breath is there, then you go to the pratyaha. This is an advanced stage where one has to learn to withdraw the senses. So once you have learned how to sit, once you have learned how to control your breath, that is pranayam, then you should be able to withdraw your senses. For example, when you are doing pranayam, you should be able to withdraw your listening sense. You should be able to withdraw your touch sense of touch. कोई आपको छू रहा है, it should not disturb you. कोई कुछ भी कह रहा है आसपास बैठ के, तो that should not disturb you. That is what is referring to withdrawal of senses. यानी कि जो senses है broadly 5 senses है. There are nowadays, if we go by science, latest research, there are 10 senses. Now even pain sense is also recognized. Pain was not recognized traditionally as a sense, but broadly देखें, जो कि काफी समय से सभी जानते हैं, that is 5 senses. 5 senses में one should be able to withdraw those senses. Why? When one has taken a particular body posture, one is in the state of pranayam. The next stage is one should be able to withdraw these senses. दूसरा व्यक्ति क्या रहा कह रहा उसकी तरफ attention नहीं जाना चाहिए. You should be able to withdraw hearing sense, sense of touch, and so on and so forth, sense of pain. So these are, pain is new addition to those 5 senses. So जैसे मैंने कहा, आज जो current science के हिसाब से we talk about 10 senses, but ये जो 5 senses है, they are known traditionally, they are widely known. Now go to the next further advanced stage, that is dharana. Dharana means concentration. Then one should be able to concentrate. क्या हो रहा बाहर, नगाड़ा बज रहा, तबला बज रहा है, it should not disturb you. देखो अब मैं आपको समझ में आना चाहिए, कई लोग क्लेम करते हैं, अरे मैं तो योग करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ. कितने ऐसे हैं जो प्रत्याहार स्टेज तक भी आ पाते हैं? कितने ऐसे हैं जो धारणा यानी कि कंसंट्रेशन स्टेज पे आते हैं? सो कंसंट्रेशन देखिए, इट इज द नेक्स्ट लेवल. इनकी विड्रॉल ऑफ सेंसेस की नेक्स्ट लेवल है. दैट मींस टोटली यू आर अनअवेयर कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, यू आर गोइंग इनसाइड. दिस इज एन इनर जर्नी फ्रॉम एक्सटर्नल वर्ल्ड टुवर्ड्स इनर वर्ल्ड. फर्दर ध्यान, दैट इज द 7th लेवल. ध्यान जिसको आप मेडिटेशन कहते हैं. लेकिन आज की फैशन की दुनिया में क्या हो रहा है, कोई घर के कोने में बैठता है, लेफ्ट नॉस्ट्रल से हवा लेता है, राइट से छोड़ता है, फिर बोलता है मैं तो मेडिटेशन करता हूँ. और मेडिटेशन तो तब होना है व्हेन यू हैव कंसंट्रेशन. आर यू एबल टू कंसंट्रेट? आर यू एबल टू विथड्रॉ योर सेंसेस?
लेकिन ऐसा कितने लोग मिलेंगे? है लोग, देयर आर पीपल, बट कितने? तो ध्यान इज द एडवांस स्टेज, एंड देन फाइनली वी हैव samadhi, that is the absorption with the Almighty, absorption with the higher spirit. That is samadhi, totally cut from the external world. ये 8 stages है या 8 limbs है, or what we call it 8-fold means of yoga or yoga. इन 8 का ध्यान रखना जरूरी है, इन 8 को accomplish करना जरूरी है. Then you will be able to master the life skills. अपनी जो लाइफ स्किल्स की बात हम करते हैं, लाइफ स्किल्स इसी में से ड्रा होती है. लाइफ स्किल्स में भी यही है, डूज एंड डोंट, व्हाट यू शुड डू, व्हाट यू शुड नॉट डू, हाउ यू शुड कम्युनिकेट, हाउ यू शुड नॉट कम्युनिकेट, सो ऑन एंड so forth. Let me now briefly tell you about each one of them. The 8-fold path of Patanjali's yoga consists of a set of prescriptions which are morally and disciplined, morally disciplined and purposeful life for living, for having a morally disciplined and purposeful life. ये 2 terms बहुत important है. हमारे राजीव शुक्ल जी ने शुरू में ही कहा डिसिप्लिन. इट्स एन योग की जब हम बात करते हैं, वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन. तो डिसिप्लिन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है. डिसिप्लिन सिर्फ विश्वविद्यालय में इंपॉर्टेंट नहीं है, डिसिप्लिन सेल्फ खुद के लिए भी इंपॉर्टेंट है. सो मॉरली डिसिप्लिन एंड पर्पसफुल लाइफ. सी, योग करना डज नॉट मीन कि बाबा जी बन जाओ, योगी डज नॉट मीन कि सन्यासी बन जाओ. नो, नॉट नेसेसरी. You can live a fruitful life, you can live a meaningful life, you have to be morally disciplined. For that, you need to develop the life skills, and for developing the life skills, Yoga Sutra is the best source. और इसमें there is a lot of potential to do research. Some of our researchers can think how to empirically test it in the field, maybe on executives, maybe on any segment of the society. Now let me tell you briefly यम के बारे में बोलता हूँ, क्या नहीं करना चाहिए. अब देखो अंग्रेजी में बोलेंगे तो यमाज हो गया, बेसिकली यम है. यमाज आर, अब चूंकि यहाँ पे मेरे को प्लूरल बोलना था तो इसलिए मैंने यमाज ही इसमें लिखा. बेसिकली यम, यमाज आर ethical rules which can be thought of as moral imperatives, the don'ts. So we are referring to, जैसे मैंने पहले कहा, don'ts को रेफर कर रहे हैं हम लोग. The 5 yamas listed by Patanjali in Yoga Sutra are: 1. Ahimsa, non-violence, not harming other human beings. When we are not harming other human beings, then we are referring to ahimsa. When we are talking about non-violence, when we are talking about not harming other living beings, we are talking about ahimsa. कई जगहों पे लिटरेचर में आप देखेंगे, जब अहिंसा को वो इंग्लिश में लिखते तो अहिंसा लिखते, एम लिखते. But I think it is not, the word is not actually ahimsa, it is ahimsa. So here I have put ahimsa. So जब जो नहीं करना चाहे उसमें पहली बात जो Patanjali has prescribed is ahimsa, non-violence, not harming other living beings. Second, satya, truthfulness, non-falsehood. सच तो कहना चाहिए लेकिन it should non-falsehood. You see, this falsehood, truthfulness refers to non-falsehood only, but then here satya means सत्य बोलना चाहिए. That comes actually नियम में, but यहाँ इसमें यम में इसलिए रखा गया है कि भाई you have to be careful about भी, ऐसा ना हो कि सत्य
असत्य नहीं बोलना चाहिए. We should not talk untruth. So असत्य नहीं बोले. असत्य भी, असत्य comes under yam. Then non-stealing. So one should not steal. One should not steal. That means कोई किसी भी तरह की चोरी नहीं करना चाहिए. Brahmacharya, chastity, marital fidelity or sexual restraint should be observed. It should be observed. So one should be truthful. One should not tell lies. One should not steal. Similarly, one should not break the marital fidelity should be maintained. Sexual restraint is necessary. Right? So these are some prescriptions in Patanjali. So ahimsa is that one should not, ahimsa refers to non-violence, not harming. Satya is truthfulness, which should be there. So one should not tell lies, one should not steal, one should maintain the chastity. Then aparigrah. Aparigrah means non-avarice, non-possessiveness. That means one should not be greedy. One should not be greedy to possess everything. So, जैसे sharing का opposite है. So one should learn to share. So one should not keep on accumulating the possessions. So non-possessiveness is what is required. Patanjali states how and why each of the self-restraints help in an individual's growth. Further, for example, Patanjali states that the virtue of non-violence and non-injury to others, that is ahimsa, leads to the abandonment of enmity. A state that leads the yogi. Yogi here refers to one who practices yoga, to the perfection of inner and outer amity with everyone and everything. So these are certain things which one should not do, and one should say, for example, truthfulness की बात मैं कर रहा था. One should not tell lies. So truthful होना चाहिए. One should not tell lies. Then niyam, second one. Here some of the examples are the second component of Patanjali's Yoga Sutra is niyam, which includes virtuous habits and observances, the do's. Sadhana pada verse, this is a verse reference to that particular verse, so that is not important for you. But niyamas में जो ने refer किया है, जैसे शौच, purity, clearness of mind and speech and body. So clearness of mind, speech and body. Say one should not be abusive, one should be very clean in the language. Santosh is second. Contentment, acceptance of others, acceptance of one's circumstances as they are in order to get past or change them. Optimism for self. So one should be optimistic. One must be contented. Contentment is important. That is santosh. जैसे कई बार रेफर बोलते करते हैं आत्म संतोष. Then tapas, that is persistence, perseverance, austerity, asceticism, self-discipline. So keep on trying, keep on working hard. In the case of students, there is no substitute to hard work. So you have to keep on persisting, keep on perseverance is equally important. Austerity, asceticism, and self-discipline. This refers to tapas. Then he has talked about Swadhyay. That is, Swadhyay refers to the study of Vedas, study of self-reflection, introspection of thoughts, speech, and actions. यहाँ study of Vedas एक example है. So one may study anything that is relevant for the study of self-reflection, introspection of thoughts, speech, and actions.
Further, he has also talked about Ishwar Pranidhan, that contemplation of the Ishvara, that is God, Supreme Being, Brahman, true self, unchanging reality. So, reference to the higher spirit. This is reference to the higher spirit. As with the Yamas, Patanjali explains how and why each of the niyamas help in personal growth. So ultimately, all these practices lead to personal growth. For example, Patanjali states that the virtue of contentment and acceptance of others as they are, that is santosh, leads to the state where inner sources of joy matter most, and the craving for external sources of pleasure ceases. So if one is able to draw santosh or contentment from within, so his attraction for the external sources of pleasure automatically reduces. Then we come to the third, that is asana. Here, Patanjali begins discussion of asana, that is posture or seat, by defining it as follows. Asana is a posture that one can hold for a period of time, staying relaxed, steady, comfortable, and motionless. Say Padmasana mein jab baithta hai, so one should be able to sit in that posture for certain period of time. ऐसा नहीं कि थोड़ा बैठे और फिर चेंज किया बार बार, वो सही नहीं है. So one should be able to stay and feel relaxed in that particular posture of the body. That's why practice is necessary. The Yoga Sutra does not list any specific asana. Yoga Sutra ये नहीं कहता कि भैया पद्मासन ही करते रहो, दूसरे आसन आप वृक्षासन मत करिए. ऐसा वो कोई prescription नहीं है कि ये best है और ये best नहीं है. So different asanas have been prescribed, but then not in terms of priority. Aranya translates Yoga Sutra as asanas are perfected over time by relaxation of effort with meditation on the infinite. This combination and practice stops the quivering of body. So, relaxation of effort is important. Asanas are perfected over time. When we keep on practicing, they are perfected over time by relaxation of effort with meditation on the infinite. This combination and practice stops the quivering of body. So one doesn't become, that uneasiness stops. Any posture that causes pain or restlessness is not a yogic posture. So here the point is that if we are doing yogic practice or having yogic posture correctly, then with practice you won't experience pain. But if it is happening, then that means you are not having the right posture of the body. One requirement of correct posture for sitting meditation is to keep chest, neck, and head erect. That is proper spinal posture. अगर आप देखिए मेडिकल साइंस की तरफ से भी देखें, in medical science also, when we talk about physiotherapy, this posture is recommended. In modern yoga, asanas are prominent and numerous, unlike in any earlier form of yoga. In modern yoga also, modern yoga वही हुआ जो आज के लोग practice करते हैं. Asanas are prominent and numerous. There are a large number of yogas, unlike in any earlier form of yoga. So earlier it was slightly, naturally those days things were slightly different. Now coming to fourth stage, pranayam. Pranayam is the control of breath from the Sanskrit prana or pran, and ayam means restrain. After a desired posture has been achieved, verses recommend pranayama, the practice of
consciously regulating the breath, inhalation, the full pause, exhaustion, exhalation, and the empty pause. This is done in several ways, such as by inhaling and then suspending exhalation. That means inhale, stop for a period, exhaling, and then suspending inhalation for a period. That means inhale, stop for some time, exhale, then stop for some time, again inhale. That way. Similarly, by slowing the inhalation and exhaustion, dhire dhire, inhale slowly, inhale, exhale slowly, or by consciously changing the timing and length of the consciously. So you are doing it deliberately in a planned manner. So planned management may we talk about planning. So here also the planning has a very important role. Consciously changing the timing and length of the breath, deep and short breath, short breathing. Then we come to the fifth stage, pratyahar. हमारे पास टाइम है राजीव जी? यस सर। बोर तो Yes, नहीं sir. हो रहे? नहीं सर, बहुत अच्छा है, इतना क्लियर हो रहा है सर, स्पष्ट हो रहा है। Pratyahar, fifth stage. Pratyahar is a combination of two Sanskrit words. Prati, the prati say it refers to against or contra, and ahar refers to bring near, fetch, bring near or fetch. This is the fifth stage which we have to remember. Pratyahar is drawing within one's awareness. It's a process of retracting the sensory experience from external objects. जैसे मैंने कहा, जब आप फोर्थ स्टेज पे पहुंच गए और फिर फिफ्थ प्रत्याहार में बाहर, बॉडी से बाहर, कमरे में कितनी लाइट है, क्या स्मेल आ रहा है, कौन चल रहा है, you have to withdraw. You should be able to withdraw your senses. तो आपको कुछ नहीं पता लगेगा. So it doesn't disturb you, it doesn't distract you. अगर ऐसा है, you are at pratyahar stage. It's a step of self-extraction and abstraction. Pratyahar is not consciously closing one's eyes. लोग बाग सोचते बस आंखें बंद कर दी हमने तो मेडिटेट कर रहे हैं सब, लेकिन कौन क्या बात कर रहा है वो सब पता रहता है. So that means that is not you, pratyahar. Pratyahar is not a consciously closing one's eyes to the sensory world. It is consciously closing one's mind processes to the sensory world. This is very important. Simply आंखें बंद करने से नहीं होता है योग. So you should be able to close the doors. जैसे बोलते हैं रंग महल के 10 दरवाजे. So we are referring to those senses which are catering, which are bringing information to the mind. Brain को, there are sensory, we have nerves. There are two types of nerves. One is the sensory nerves. Sensory nerves bring information to the brain from various sources. And then motor nerves are taking information and direction from brain to various parts of the body. So here, in other words, it is all that is जो कारखाना है वो कारखाना तो ब्रेन है. अगर मान लीजिए किसी की ऑप्टिक नर्व को काट दे, the person will be blind. So it is not the eyes which are seeing the world, it is the brain which is seeing the world. So eyes तो खाली equipment है. जैसे आप किसी लेंस के थ्रू कुछ देखते हैं, बस उसी तरह लेंस की तरह है, या कैमरा के थ्रू कुछ चीज आप देखते हैं उसको क्लिक करते हैं तो कैमरा की तरह है. लेकिन actually ultimately whatever processing is happening, it is in the brain. So if we close those senses, जैसे मैंने कहा, these are the doors and windows to brain. So we should be able to close those windows. So you will not be disturbed, you will not be you will not be distracted by what is happening around you. That is why अगर ऐसा हो तो you are at pratyahar stage. और ये बहुत डिफिकल्ट है. अगर देखिए मेरे सामने आप 100 लोगों को लाएंगे जो कहते हैं कि मैं योग करता हूँ, आई डोंट थिंक 2 या 3 लोगों से ज्यादा उनमें होंगे जो प्रत्याहार स्टेज पे भी पहुंचे हो. ओके,
Then Pratyahar empowers one to stop being controlled by the external world, fetch one's attention to seek self-knowledge, and experience the freedom innate in one's inner world. So we talk about inner world. There is a world inside us. So we live between two worlds. One is inner world and the other is the external world. External world is what is objectively seen around us, physical world. And the inner world is inside. We have past experiences. We have all that is happening internally and only we can experience. That is the inner world. That is the reference to inner world. और वो प्रत्याहार स्टेज पे होता है. प्रत्याहार marks the transition of yoga experience from the first 4 limbs of Patanjali's Ashtanga scheme, that perfect external forms, to the last 3 limbs that perfect the yogis. से मतलब है जो योग करता हो. यहाँ पे योग देखकर मैंने शुरू में ही कहा, इसकी ये रॉन्गली हम हर बार कई बार इसकी रिलीजियस कनोटेशन के साथ जोड़ते हैं. इट इज नॉट. योगी का मतलब नहीं है बाबा जी. योगी मीन्स वन हु इज प्रैक्टिसिंग योग. सो यहाँ ये प्रत्याहार बहुत इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ से शुरुआत होती है जर्नी इनसाइड, जर्नी टू द इनर वर्ल्ड. सो जो रिमेनिंग पार्ट है, 3 पार्ट रिमेनिंग है, हियर इट सेपरेट्स. प्रत्याहार सेपरेट्स the external world from the inner world. So it is journey from external world towards the inner world, moving from outside to inside, from the outer sphere of the body to the inner sphere of the body. प्रत्याहारी वो स्टेज है. अगर आपकी बॉडी पे चींटी चढ़ गई तो you won't be affected. And चींटी चढ़ी, don't problem, आपको पता ही नहीं. Because you are inside, your journey. Sir, I think yeah. Then 6th stage. हाँ जी, शुक्ल जी कुछ कह रहे हैं? नहीं, ठीक सर. ठीक जा रहा है? हाँ ठीक सर, ठीक. अच्छा, धारणा, 6th stage. धारणा, very important stage. Here संस्कृत से आया धारणा. That means concentration, introspective focus and one's pointedness of mind. The root of the word is meaning to hold, maintain, keep. इसी को concentration बोलते हैं. Concentration means इनर वर्ल्ड की तरफ जर्नी है. व्हाट जिस पे कंसंट्रेट आप कर रहे हैं, मे बी ऑन ए पर्टिकुलर वर्ड, एक शब्द पे, जैसे ओम. व्हाट एवर शब्द यू चूज, बस वही समझ में आ रहा है और कहीं आपका ध्यान नहीं बढ़ता. धारणा इज द 6th limb of yoga, is holding one's mind on to a particular inner state, subject और टॉपिक ऑफ वंस माइंड. जो भी आपने चूज किया है, जिस पे आप कंसंट्रेट करेंगे, फोकस करेंगे, बस उसी पे फोकस्ड. यू आर फोकस्ड, so you are able to concentrate. That's what happens in dharana. The mind is fixed on a mantra, or some people choose a mantra. जैसे सोहम, 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 सोहम. So one concentrates on that. Or somebody may choose Om, Om. So whichever you choose, irrespective of the religion, whatever you choose, concentrate on that, focus on that. The mind is fixed on a mantra on one's breath, navel, tip of tongue, any place or any object one wants to observe, or a concept idea in one's mind. So that's why I said in the beginning, it's a spiritual journey. It's more a spiritual, it talks more about spirituality. Fixing the mind means one pointed focus, without drifting of mind and without jumping from one topic to another. वो होगा नहीं. If you have really reached that stage, ऐसा नहीं होगा. मन भटकेगा. ऐसा नहीं कि अब सोच रहे हैं, जैसे आपने ध्यान लगा, दिमाग में आ रहा है वही
कल तो MRP का लास्ट डेट है सबमिट करने का, तो मन बढ़ गया, अरे मेरा तो ये भी नहीं, ये चैप्टर भी नहीं हुआ, वो चैप्टर भी नहीं हुआ, या लास्ट डेट है या कोई परीक्षा है मंडे से, तो क्या करें, मैंने तो वो यूनिट तो तैयार ही नहीं किया, ये यूनिट, तो मन भटक रहा. If you are really reached the dharana stage, it won't happen. It won't happen at this stage. Now coming to seventh stage, that is dhyan. अब अंग्रेजी में कर दिया ध्याना, लेकिन actually it is dhyan. Dhyan is drawn from dhyan, literally means contemplation, reflection, and profound abstract meditation. Profound abstract meditation. You are in the state of meditation, practically not connected to the external world. That is what is the state of. जो लोग बात करते हैं ना क्लेम मैं सब मेडिटेशन करता हूँ, वो ये नहीं है. तो ये मेडिटेशन कहलाता है. अगर आपने दूसरी चीजों, दूसरे स्टेजेस को मास्टर किया है, then only you are doing really meditation. When dhyan is contemplating, reflecting on whichever dharana has focused on. जैसे आपने ओम पकड़ लिया, ओम ओम उस पे रिफ्लेक्ट कर, what it is, trying to understand, realize it. जिसको हम अपना क्या नाम है इसका, मास्लो, अब्राहम मास्लो ने उसको सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात की. It is a very high stage, very higher stage. Not just Maslow had also read these scriptures, and then he felt that self-actualization is the higher state. So, if in the sixth limb of yoga one focused on a personal deity, dhyan is dhyan in its contemplation. जैसे किसी ने दुर्गा पे फोकस किया तो दुर्गा पे रिफ्लेक्ट करेगा इस स्टेज में, सेवंथ स्टेज में मेडिटेट करेगा, कंटेम्पलेट करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा. इफ द कंसंट्रेशन वाज ऑन वन ऑब्जेक्ट, ध्यान इज नॉन जजमेंटल, नॉन प्रिजम्पचुअस observation of that object. So non-judgmental, it is not, you don't judge, you don't evaluate in terms of right, wrong, good, bad. No, non-presumptuous observation of that particular object that you have chosen. This is, somebody may choose to have the image of Vaishno Devi in mind if he has visited to Vaishno Devi. Somebody may choose to have the image of Makkah Medina in his mind if he has visited Makkah Medina. So he will focus on that on. So whichever object, whichever image, whichever mantra, whichever word you have chosen to contemplate on, if the focus was on a concept, idea, dhyan is contemplating that concept, idea in all its aspects, forms and consequences. Dhyan is an uninterrupted train of thought, uninterrupted train of thoughts, current of cognition, flow of awareness. This is what happens in dhyan. Flow of self-awareness की जिसकी जब हम बात करते हैं, flow of awareness and beyond self. It goes beyond self. What is there beyond one's spirit? So you have the experience of having, experience of knowing the higher spirit. Dhyan is integrally related to dharana. One leads to other. So dharana leads to dhyan. Dhyan is seventh. Dharana is a state of mind. Dhyan, the process of mind. So when we talk about dharana, we are referring to a state of mind. Kya chal raha hai mind mein? But when we say dhyan, that is the process of mind. Focusing on process, focusing in itself is a process basically. Dhyan is distinct from dharana in that the meditator becomes actively engaged with its focus. Patanjali defines contemplation, that is dhyan, as the mind process, where the mind is fixed on something and then there is a course of uniform modifications of knowledge. उसको कई लोगों का एक्सपीरियंस ये होता है, there is all light around him.
सब उसको उस कंटेम्पलेशन के स्टेज में, ध्यान के स्टेज में सिर्फ लाइट दिखती है, लाइट अराउंड एवरीवेयर। जिस साइड में भी उसका अटेंशन जाता है इंटरनली उसको लाइट ही लाइट दिखती है, प्रकाश ही प्रकाश दिखता है। आदि शंकराचार्य इन हिज कमेंट्री ऑन योग सूत्र, आदि शंकराचार्य देखिए कितने साल हो गए, even he has worked on, he has written his commentary on Yoga Sutra of Patanjali. He distinguished Dhyan from Dharana by explaining Dhyan as the yoga state, as the yogic state when there is only the stream of continuous thoughts about the object, uninterrupted by other thoughts of different kind for the same object. So you are uninterrupted, you will only focus and contemplate on whatever your image, whatever mantra, whatever word you have chosen to contemplate on. Say somebody contemplates on the concept of Shiva, तो Shiva की ही contemplation में वो रहेगा. There won't be any break. Dharana states Shankara, so Shankara has differentiated between, distinguished between Dharana and Dhyan. So Dharana के बारे में he says is focused. Dharana is focused on one object, but aware of many aspects and ideas about the same object. And then we come to the last stage, that is Samadhi. Samadhi is very, very rare to achieve. ऐसा नहीं है कि हर किसी को होता है. Samadhi, that is, it literally means putting together, joining, combining with union, harmonious whole trance. One is in the state of trance, totally out of this world. It is, one is in the state of trance. Samadhi is oneness with the subject of meditation. There is no distinction during the 8th limb of yoga between the actor of meditation, the act of meditation, and the subject of meditation. No distinction. Sab ek ho gaya. So one is in the state of trance. At the final stage, it doesn't matter. आप उसके ऊपर मिट्टी भी डालिए, आप उसके ऊपर पेड़ भी लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Continue to be in samadhi state. Very, very rare these days. Contemporary times में बहुत rare है. We have yet to see in our civil life, yet to see. हो सकता अगर deep jungles, forests, mountains में जाए कोई कबार, हो सकता कोई ऐसा मिले जो samadhi state में हो. Samadhi is that spiritual state when one's mind is so absorbed in whatever it is contemplating on, that the mind loses the sense of its own identity. Apni identity khatam. It merges with the identity of the Almighty. Almighty की identity और अपनी my identity merge हो जाती है. The thinker, the thought process, and the thought fuse with the, so the thinker one, the thought process two, and the thought. ये तीनों फ्यूज हो जाते हैं, मिल जाते हैं with the subject of thought. There is only oneness, one only, and that state is called samadhi state. Very rare to get, very rare to see in our life. But olden days, yes, there used to be people who would go to the state of samadhi. And आज की तारीख में जैसे मैंने कहा, हो सकता है किसी top hill पे जाके कोई मिले, but otherwise very difficult. Now I'll be happy if you have any questions. योगाचार्य शुक्ल जी बताएं. नहीं सर, बहुत ही अच्छा आपने सारगर्भित व्याख्या की पतंजलि का अष्टांग योग की, और आप भी स्वयं एक कर्मयोगी हैं, इस कारण आप अनुभव करते हैं, तो ये अनुभव का एक निचोड़ आपने यहाँ प्रस्तुत किया है सबके लिए. तो हम क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं. यस, कोई सुन भी रहा था कि नहीं? नहीं सर, बहुत है सर. ये अच्छा, अनम्यूट करना पड़ेगा. मनीषा प्लीज अनम्यूट. Sir, everyone.
सर हाँ, कर दिया सर कर दिया स्टूडेंट्स नाउ कैन अनम्यूट देमसेल्फ आप अनम्यूट कर सकते हैं अपना। या अमित जी कुछ बोल रहे हैं? अमित क्वेश्चन। सर गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। सर मैं तो सिर्फ आपसे जानना चाहता हूँ कि आप ये अष्टांग योग फॉलो कर रहे हैं क्या इतना स्ट्रिक्टली, क्योंकि नहीं। इतनी एनर्जी तो आप में है ही सर, और सर आप करेंगे तो फिर क्या होगा? देखिए, ये सारी चीजें जो है, इट डज नॉट मीन, मैंने जैसे शुरू में कहा, इट डज नॉट मीन यू हैव टू लीव एवरीथिंग, you have not to, but you have to be, it is very difficult to reach the 8th stage while living in this civilized, so-called civilized world. You cannot, but then there are certain things which you may be able to practice or do. Jaise in our daily practices we have to be very careful about what not to do and what to do. से कई स्टूडेंट्स की केसेस आपके सामने आते हैं, अलग अलग तरह के केसेस, वहां पे यू हैव टू यूज योर सेंस ऑफ यम एंड नियम। हेलो। या यम एंड नियम वहां हो सकता है, वी कैन अडॉप्ट सम ऑफ दीज स्टेप्स, सम ऑफ दीज स्टेजेस टू सम एक्सटेंट, बट रियल लाइफ में all the eightfold, all the stages while doing what we are doing नहीं होगा, नहीं होता। Have I answered your question? Yes sir, yes sir, yes sir. Okay. But thank you sir, thank you. भाई ऐसा कोई क्लेम करता ना मैं तो सब करता हूँ, that is not true. नहीं होता, नहीं कर सकते। We are, none of us has reached that samadhi stage. Even I would say प्रत्याहार stage पे नहीं पहुंचे कोई भी। We have not. But yes, people may make sincere efforts. प्राणायाम तक पहुंच सकते हैं, provided that you are very regular, very persistent in your practice. Keep on doing and you seeing to it that जो मैंने बातें नियम, फॉर एग्जाम्पल वो यम में बोली, see to it that उसमें जो नहीं करना चाहे वो न करें, नियम में बोली वो करें जो करना चाहिए to the extent possible for you. Same way, posture of body and that control of breath to the extent you can do, इधर तक पहुंच सकता है while living in normal day to day जो हमारी activities होती. But yes, one can progress over the period of time. जब धीरे धीरे आपकी जो day to day activities, routine activities कम होती जाएंगी, so you can withdraw from certain things and focus more towards pratyahar and then so on and so forth. Yes, next question. Sir, can I ask a question? Yes. Yeah, please, Sheetal, continue. Sir, you told that yoga का कोई religion नहीं होता. It's not from any religion. But yoga word first time ऋग्वेद में describe किया गया था. In our ancient Hindu Vedic scriptures, वहीं से योगा शब्द आया है और वहीं इसका detailed description है. तो yoga is related to Hindu, सनातन हिंदू धर्म. नहीं, वो तो क्या सोर्स की बात। जब सोर्स कई बातें ऐसी होती है उनका कोई ना कोई तो सोर्स होगा, कहाँ से आया। But then it doesn't tell you that you should be a Hindu only for observing yoga. कहीं पे लिखा है क्या? नहीं लिखा। No sir, anyone can it is accept promoting this. spirituality. It is promoting spirituality. So it is not promoting Sanatan Dharma. No. Source is there. Source तो कहीं ना कहीं होगा ही. Source, yes, it is true. Source तो वहाँ हमारे वेदों से या हमारे जैसे पातंजलि himself was a saint, great saint. But then उस जमाने के saints तो scholars भी हुआ करते थे, great scholars, जिनने ग्रंथों के ग्रंथ लिखे हैं. But so far as Patanjali's जो योग सूत्र Sir, according to Hindu Vedic scriptures, Vedas किसी व्यक्ति या किसी human being ने नहीं लिखे हैं. फिर कहाँ से आए? ऊपर से थोड़ी पत्तों की तरह से आए. It is not like true. नहीं, according to No. There is literature available which says there was time, Vedic time जिसको कहते हैं ना, उसमें nobody would claim authorship. There used to be so selfless scholars or rishis. Indian context में rishi और scholar to a great extent synonymous था. So those rishis
never claimed authorship. They did not claim authorship. They subscribed through their yogic exercises, through dhyan and so on. They created literature, they created scriptures. पहले जमाने में तो word of mouth से होता था, generation to generation होता था. And then later on, पेपर तो बहुत बाद की बात है, उस पे पत्ते पे लिखना शुरू हो गया, है ना, पत्ते पे लिखना शुरू करे, लीव्स पे Yes, लिखना sir, शुरू हो. वो ताड़पत्र पे लिखा जाता था. एग्जैक्टली, तो इस तरह से वो हिस्ट्री है. हिस्टोरिकली इट हैज, जो कम्युनिकेशन का, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन जब शुरुआत हुई पहले, जैसे गुरु और शिष्य की परंपरा थी, उसमें ऐसा राइटिंग में कुछ नहीं था. जो गुरु ने कहा वही फाइनल है. वो कोई पुस्तक नहीं कहता कि रेफरेंस वो नहीं देता था, लिटरेचर रिव्यू करो. नॉट दैट वे. व्हाट गुरु वुड से, that was the final word. So it was from generation to generation, guru to guru, rishi to rishi, that used to happen. So this is not that Veda का कोई author नहीं का मतलब ये है, they never claimed authorship. They were so selfless. उनमें कोई लालच या कोई ऐसी तमन्ना नहीं थी कि मेरा author का as an author नाम आए. No such greed. So they never claimed authorship, but then the knowledge got transferred, or it transited from one generation to another generation. So that's what has happened in the case of yoga. But later period में, when it came to, say for example, Treta का time आ गया. Treta में you have scriptures where Vishwamitra, we know that Vishwamitra authored the Ramayana. Then later on, much later, वो तो कलयुग में फिर आगे तुलसी रामायण वगैरह, वो तो सब आजकल की तारीख में तो खैर स्क्रिप्चर्स है ही और ऑथर्स भी क्लेम करते हैं. लेकिन सत्यायुग में या इवन वैदिक पीरियड में, the tradition that time was that nobody claimed authorship. That's about, and then word of mouth from generation to generation pass होता रहा. And then later on फिर ऑथर्स फिर लिखना शुरू करें, ऑथरशिप आने लगा. जैसे आप देखिए कितना कंट्रीब्यूशन वेदव्यास का है. महर्षि वेदव्यास हैज रिटन ऑल द 18 पुराणास. सारे पुराण उनके लिखे हुए हैं. ऑल द 18 पुराणास वर रिटन बाय महर्षि वेदव्यास. तो व्यास का उपनिषद भी काफी हद तक कंट्रीब्यूशन है उनका. सो बट देन टुडे वी नो, वो उन्होंने स्क्रिप्ट्स उस टाइम क्रिएट किया. बाय दैट स्टेज वो स्टेज आया था. तो देन ऐसा नहीं है कि ऑथर ने था, बट यू कैन सर्टेनली से, जहां तक इनकी बात है, कि कई लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, अनगिनत, न्यूमरस ऋषिज, न्यूमरस स्कॉलर्स ऑफ दैट टाइम, बट नोबडी क्लेम्ड ऑथरशिप. सो इट वेंट ऑन, नॉलेज पास ऑन होती गई. दैट्स हाउ आई अंडरस्टैंड इट. यस सर, थैंक यू सर. सर एक और क्वेश्चन है. आपने अहिंसा वर्ड को एक्सप्लेन किया. सो अहिंसा मीन्स किसी को हर्ट नहीं करना, बट सर नाउअडेज मीट ईटिंग बहुत फॉलो कर रहे हैं लोग. तो अगर मीट ईटिंग करते हैं और वो बोलते हैं हम योगी है, हम योगा कर रहे हैं, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, तो मीट ईटिंग विल अफेक्ट द मेंटेलिटी आल्सो, कॉन्शियसनेस आल्सो, बिकॉज जब किसी का हत्या करते हैं किसी जीव का, तो उसका कॉन्शियसनेस उस फूड में आ जाता है. एग्जैक्टली, इसीलिए तो मैंने ये सब सेशन रखा. भैया ऐसा नहीं, क्लेम करने से कुछ नहीं होता. आर वी प्रैक्टिसिंग व्हाट योग सूत्र सेज? मोस्ट ऑफ केसेस में नहीं. और चूंकि नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं कि हम कलयुग में हैं. कलयुग तो इसीलिए कह रहे हैं. अगर हम सब करते जो हम कहते हैं, तब तो सत्यायुग कहलाता. त्रेता में भी डिटरेशन हुई थी. पहले आपका रावण का एग्जाम्पल है, और एंड सो ऑन. सिमिलरली द्वापर में फर्दर डिटरेशन हो गया, तो वो 100 कौरव थे, और नेगेटिव एक्सेप्ट वन. देन कलयुग में अनगिनत नेगेटिव है, अनलिमिटेड नेगेटिव है. कहते कुछ है, करते कुछ है, बिकरिंग एंड देन हर्टिंग एवरीबॉडी, हर्टिंग अदर्स, नॉट केयरिंग अबाउट अदर्स. ये प्रैक्टिसेस है. दैट्स व्हाई वी नीड टू लर्न कि भैया क्या हमें करना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन. सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट.
आप अंदर झांकिए इनर वर्ल्ड में और देखिए कहाँ आप गलत जा रहे हैं, क्या करेक्शन रिक्वायर्ड है, where do you want, where you must correct yourself so that you really follow yam, then niyam and so on. Have I Yes, answered sir. your question? बस Yes, सर sir. अभी Thank आपका you. इंट्रोस्पेक्शन और इनर वर्ल्ड से ही है। डॉक्टर मोनिका सैनी का है, हाउ कैन वी कंट्रोल द इनर वर्ल्ड सर? योग बस यही तो अभी तक 1 घंटे से क्या कह रहे हैं, यही तो इनर वर्ल्ड को कंट्रोल करने का ये वन ऑफ द बेस्ट वेज एंड साइंटिफिक वेज। देखिए साइंटिफिकली भी कई एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं मेडिकल साइंस में विच हैव प्रूव्ड दैट यस इट हैज एन इम्पैक्ट, it has an impact on your world. If you don't hurt others, your inner world will not be disturbed. If you don't harm other people, or if you don't take somebody else's credit, your inner world will remain stable. Similarly, if you are practicing what you should practice, when you are practicing the activities which contribute to self-discipline, your inner world will not have turmoil. There will be stability. There will be peace. So peace कैसे आती है? इसी से यम को रियल सेंस में प्रैक्टिस करें, नियम को रियल सेंस में प्रैक्टिस करें, and then you will see peace starts coming. Then you go to the posture of body, then you go to the pranayam. कम से कम प्राणायाम तक भी अगर हम अच्छी तरह से करें, you can take it from me that you will find that inner world is under your control and you are experiencing peace. सर एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, सर इज देयर एनी सूत्र फॉर शौच? सूत्र फॉर शौच ही बताया था आपने, स्वच्छता शौच। के लिए। शौच हाँ, शौच। शौच तो है ना, नियम है, साफ सुथरा रहना, सफाई करना, रेगुलरली नहाना, वॉशरूम जाएंगे तो अच्छी तरह से सफाई करना, शौच। सो शौच से मतलब है क्लीनलीनेस, साफ सफाई। जैसे अपना पूरे देश, अपना इंदौर तो स्वच्छ इंदौर है, 4 साल से टॉप नंबर 1 इन द कंट्री। सो क्लीनलीनेस खाली एक्सटर्नल नहीं बल्कि इनर भी। किसी की तरफ बैर न रखे, किसी को कहें कुछ और करे कुछ नहीं, इनके सामने कहें बहुत अच्छे और पीछे से फिर उसके टांग खींचे। डोंट डू दैट। So clean at heart, one should be clean at heart, clean in one's intentions. That is what refers to niyam. Shot se matlab wo hai cleanliness. We should be clean in our in our language. We should be clean in what we do daily. We should be clean in our dealings. Yeah, Asmita has raised hand. Asmita Sharma, have you any question? नमस्कार सर, मैं प्रदीप शर्मा बोल रहा हूँ। जी जी सर। सर ध्यान और धारणा में कंफ्यूजन हो रहा है। जो चीज मैं ध्यान समझता था वो सब चीजें धारणा में आई है, जी। तो धारणा से ध्यान अलग कैसे होगी? धारणा से ध्यान कैसे अलग हो गई, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। दैट इज व्हाई आदि शंकराचार्य ने भी इन दोनों को डिफरेंशिएट कर रहा, क्योंकि तब भी उस समय भी कई ऐसे विद्वान हुए होंगे जैसे आप हैं जिन्होंने ये सवाल उनसे पूछा होगा, सब ये तो एक ही बात है। देन ही हैज कमेंट्री, उन्होंने उनकी एक पूरा वो है स्क्रिप्चर है where he has given commentary on this and he has differentiated between ध्यान and धारणा। पहले धारणा होता है एंड उसके बाद में ध्यान होता है। सो आई हैव गिवन दिस डिस्टिंक्शन। ध्यान में कंसंट्रेशन है, फोकस है ऑन वननेस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन धारणा में नो, दैट इज द स्टेट ऑफ माइंड। धारणा रेफर्स टू द स्टेट ऑफ माइंड, whereas ध्यान रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ माइंड। सो स्टेट और प्रोसेस का जो अंतर है वही अंतर ध्यान और धारणा का। पहले धारणा एंड देन ध्यान। सो फर्स्ट कंटेम्पलेशन एंड देन कंसंट्रेशन। सो कंटेम्पलेट पहले, मतलब दिस धारणा करें पहले एंड देन कंसंट्रेशन होगा। सो दैट्स व्हाट हाउ Patanjali Yoga Sutra defines this, and Adi Shankaracharya has also very clearly distinguished between them, contemplation and concentration. So dharana में one is trying to reflect on जिस पे वो focus कर रहा है,
बट देन उसमें वननेस नहीं है, धारणा में वननेस नहीं है, लेकिन ध्यान में वननेस है, फोकसिंग ऑन वन only one, just जो भी चूज किया हो. If one has chosen a mantra, if one has chosen a say image, whichever one has chosen, that choice is with the person. And concentration में यानी कि ध्यान में बस उसी तरफ मगन है, और कुछ नहीं दिखता, और कुछ नहीं सोचता, और कुछ नहीं उसको समझ में आता. Whereas contemplation उससे, ये जो धारणा है उससे पहले का स्टेज. तो उसमें प्रत्याहार में ऑलरेडी कंट्रोल ऑफ सेंसेस सीख लिया, उसके बाद में लेटर ऑन दिस धारणा कम्स. प्रत्याहार के बाद व्हेन वन हैज लर्न टू विथड्रॉ द सेंसेस, उसके बाद ही धारणा आता है. सो वन लर्न्स आफ्टर विथड्रॉल, वन लर्न्स टू रिफ्लेक्ट ऑन इंटरनली. इट इज ए सब जर्नी टुवर्ड्स इनर वर्ल्ड है. वन ट्राइज टू रिफ्लेक्ट ऑन what he is experiencing, what she is experiencing, and then the next stage dhyan pe focuses on oneness only. So state and process, ye do distinguishing features. Have I answered your question? थैंक यू सर. यस सर. Okay. सर पहले धारणा को साधते हैं फिर ध्यान की तरफ जाते हैं, ऐसा meaning? हाँ, exactly. पहले धारणा होगा फिर ध्यान हो, उल्टा नहीं है. थैंक यू सर, बहुत अच्छा सेशन रहा सर. जी. तो हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं. यस यस स्टूडेंट, यस दिस विल बी लास्ट क्वेश्चन. हाँ Sir, can I हाँ. ask? बस हो गया आपको शीतल. यू ऑलरेडी आस्क्ड 2-3 क्वेश्चंस. गिव चांस टू अदर्स. या हाँ यस. गुड इवनिंग सर. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या योग से परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं हम एज ए स्टूडेंट सर? अगर परीक्षा पास नहीं कर सकते, यस, वन कैन लर्न टू बी persistent. One can learn to be hardworking and not run away from hard work. One can learn to focus on studies. One can learn to be regular in what he is supposed to do. Say if you prepare a schedule, जैसे शुक्ल जी ने, Professor Shukla in the beginning mentioned self-discipline. If you learn to have discipline, if there is self-discipline, you are moving towards better preparedness for the examination. So initial phases of yoga say you can prepare yourself better for the examination. आई थिंक सर यहीं पे थैंक यू सो मच यहीं पे सत्र को समाप्त किया जाए. बहुत ही अच्छी ये सत्र रहा सर, ज्ञानवर्धक सत्र रहा, और आपने समय निकाला, अनुरोध स्वीकार, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और कुछ चीजें आपने बहुत अच्छी कही सर. उसके लिए ब्रेन के लिए, ब्रेन कैसे काम करता है, रंग महल के 10 दरवाजे, मतलब यानी कि हमको कैसे ब्रेन का पावर भी कैसे बढ़ा सकते हैं. तो हम योग के जो बाय फॉलोइंग द योगा वे ऑफ लाइफ, इट कैन हेल्प द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ आवर पर्सनालिटी एज वेल एज टू परफॉर्म आवर ड्यूटी एफिशिएंटली. चाहे वो स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम का हो, चाहे वो फैकल्टी के लिए अपना जो प्रिपरेशन करना है अपने क्लास का, सब में इसमें हेल्प होता है. तो once again we thanks Dr. Upinder Dhar sir for wonderful session. Comments आ रहे हैं सर के wonderful sessions के लिए. So आज यही समाप्त करते हैं सर. Okay, thank you. Namaskar. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. होगा